था? What was the we were writing na? What we have noted? Requirements over, huh? What was the last topic we wrote in requirements? Under exceptional circumstances. Okay, okay. So write the how many 4 points are over? 5 points. Write the 6th point. Cost auditor should always keep in mind. Cost auditor shall always keep in mind. Cost auditor shall always keep in mind that there is a possibility of shall always keep in mind that there is a possibility of material misstatement in cost statements. There is a possibility of in cost statements. In cost statements. Next point. He shall always obtain. There is a possibility of in cost statements. Next point. He shall always obtain sufficient and appropriate audit evidence. He shall always obtain sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient and appropriate audit evidence. Next. He shall always exercise. Which judgment? Professional judgment. He shall always exercise professional judgment. Always exercise professional judgment. And next point. If he thinks that objective is not getting achieved. Please tell me what is the major objective? Reasonable assurance. If he thinks that objective is not getting achieved due to non-availability of SAAE. Objective is not getting achieved due to non-availability of SAAE or non-availability of SA. You know the SAE का full form? Or due to high ROMM. अभी ना एक काम करो, ये एक चार्ट बनाओ. Due to high पूरा सेंटेंस बोलना एक बार. If he thinks that the objective is not getting achieved due to non-availability of SAAE and due to high ROMM, he shall modify his opinion. अभी मैं एक चार्ट बनाता हूं. Just make the chart along with me. ठीक है, ऐसे करके एक बॉक्स बनाओ और हियर शैल वी राइट सिचुएशंस, ऑडिटर्स जजमेंट, सिचुएशन ऑडिटर्स जजमेंट, मटेरियल बना हुआ है क्या? हाँ, तो फिर यही कहां पे बनाया था आपने? फर्स्ट वाले में बनाया था क्या? हाँ, तो वही सेम वही चार्ट है फिर. अच्छा हुआ बोल दिया, तो नो नीड टू मेक इट देन. उसमें लिख लो रेफर चार्ट. कहां पे लिखवाया था हमने? वेयर डिड आई मेक यू राइट? वन 143 सबसेक्शन 4 के बाद, तो वहीं पे लिख लो रेफर. ये जो पॉइंट आई मेड यू राइट ना, जस्ट बिलो दैट राइट, रेफर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 4 चार्ट.
कंपनी ऑडिट, रेफर सेक्शन 143 सबसेक्शन 4 चार्ट। अच्छा मेरे को लगा था हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो देर तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना, इफ इट इज एम एंड पी and if it is not M and P due to the availability of audit evidence, due to non-availability. If I'm not wrong, I made you write 6 to 7 boxes as well over there, right? So same chart we have to copy paste here. Now read the whole sentence, you will get to know why I am telling you to refer that. Read the whole sentence what we have written. If the auditor thinks that the objective is not achieved, what is our objective? Reasonable assurance. That is not getting achieved due to what can be the possible reasons? या तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ SAAE और हाई रोमम प्रेजेंट, देन द ऑडिटर शैल मॉडिफाई हिज ओपिनियन। और जैसे हम लोग मॉडिफाई वर्ड करते हैं, 3 वर्ड शुड कम टू योर माइंड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। दैट इज द रीजन आई वांटेड टू मेक यू राइट। सो वी हैव ऑलरेडी डन, तो जस्ट क्रॉस रेफर दैट चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पुट द हेडिंग एप्लीकेशन गाइडेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। पुट द हेडिंग एप्लीकेशन गाइडेंस of this standard. I will not make you write this all extra exaggerated content. I'll make you write to the point what is required. Application guidance of this standard. अच्छा मेरे को बताओ, while doing the audit, you must follow your ethical requirements or you may follow. And name the ethical requirements, please. Integrity, objectivity. So point number 1. While conducting the audit, application guidance of this standard के point number 1, while conducting audit, comma, it is expected from cost auditor, while conducting audit, comma, it is expected from the cost auditor, it is expected from the cost auditor to must comply with his ethical requirements, must comply with his ethical requirements, with his ethical requirements, right? Such as write the 5 words: integrity, comma, objectivity, comma, confidentiality, integrity, objectivity, comma, confidentiality, comma, professional due care and competence, professional due care and competence, and what is the last one? Professional behavior. Professional due care and competence and professional behavior. अभी full stop डालो, full stop. But most of all, he should be independent. But most of all, he should be independent in mind and appearance. He should be independent in mind and appearance. He should be independent in mind and appearance. Clear? Done. Next point. Second point. While conducting the cost audit, he is expected. While conducting the cost audit, he is expected to follow. He is expected to follow cost auditing standards. He is expected to follow cost auditing standards. But in case, Acha, what did I tell you? When there's a fight going on between the cost auditing standards and laws and regulations, what prevails over what? Laws and regulations will override the cost auditing standard. Because cost auditing standards are made by the institute. Am I correct or not? They cannot override the law which is made by the parliamentary. So regulatory bodies are bigger than what? This our own statutory body, right?
So read the whole sentence what we have written. He is expected to follow cost auditing standards, but in case there is a inconsistency between, in case there is inconsistency, in case there is inconsistency between cost auditing standards and laws or regulations, in case there is an inconsistency between cost auditing standards and laws or regulations, comma, latter prevails over former. Latter, Latter, latter prevails over former. ठीक है, laws or regulations will prevail over the cost auditing standards. Clear है? Right? Third point. अच्छा, what do you mean by departure? If you're following the cost auditing standards or if you're moving away from them, you are doing something which is not given in the standard. So right, next point. In case there is a need to departure, in case there is a need to depart, not departure, in case there is a need to depart from relevant cost auditing standard, in case there is a need to depart from relevant cost audit standards, comma, he shall document the reason for the same. He shall document the reason for the same. Why you are going away from the standard? You have to make sure that you should make the reason for the same. कि मैंने ये सिचुएशन में जो स्टैंडर्ड बोल रहा था, why I didn't apply. तो because next year it will help you as a guide for the next year audit. Am I correct? So you should document the reasons for the same. Next point. Put the heading and 5-star marks to this topic. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. इसके अंदर अपने को थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. Put the heading. Professional skepticism. Professional skepticism. इसके ब्रैकेट में लिखो नॉट सस्पिशियस माइंड. जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सस्पिशियस माइंड और क्वेश्चनिंग में. ब्रैकेट में लिख लो नॉट अ सस्पिशियस माइंड. नॉट अ सस्पिशियस माइंड. अंडर दैट point number 1. Now start writing. Point number 1. The attitude of skepticism means the attitude of skepticism means having a questioning mind, on having the questioning mind on available evidences, and be alert. Achha, when you should be alert? When everything is falling in line or contradiction is coming. And be alert when the audit evidence obtained, and be alert when the audit evidence obtained contradicts, this word contradicts the information obtained from management and TCWG. Contradicts the information obtained from management and TCWG. Contradicts the information obtained from management and TCWG. What is TCWG? Those charged with top level management. Point number 2. This skepticism attitude, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर. देखना, मीनिंग आता है डायरेक्ट शॉर्ट नोट. दिस skepticism attitude is required throughout the audit.
अम्मा शुड आई गेट इट स्विच्ड ऑफ? भाई कर दो, बंद कर दो। बेटर? क्या लिखा हमने? सॉरी, सेकंड पॉइंट, दिस एटीट्यूड ऑफ स्केप्टिसिज्म इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ऑडिट. It is required throughout the audit. Next point. This attitude of skepticism is required throughout the audit. Next point. It helps in efficiency and effectiveness of audit. It helps in efficiency and effectiveness of audit. Efficiency and effectiveness of audit, and at the same time keeps moral check on entity. At the same time keeps moral check on entity. At the same time it keeps moral check on entity. कितने पॉइंट्स हो गए? 3 points. Fourth point. अच्छा ये बताओ, MRL और WRL is your first option or last option? That is also called professional skepticism. So you should not draw the opinion just by obtaining WRL, क्योंकि WRL is just going to be obtained because you have to show it to peer review कि I have done what is supposed to do. But expressing an opinion is completely wrong on the part of whom? Auditor. So right. Next point. Skepticism also ensures that WRL or MRL, skepticism also ensures that WRL or MRL is not a substitute for, skepticism also ensures that WRL or MRL is not a substitute of, look at the last line, that is this line I am talking about. WRL or MRL is not a substitute of obtaining SAAE. WRL or MRL is not a substitute of obtaining SAAE to draw conclusions. Fair enough? WRL or MRL is not a substitute of obtaining SAAE to draw conclusion. बहुत important line है. Make sure that you should never express opinion just because someone has given you the WRL, क्योंकि WRL is neither sufficient nor appropriate audit evidence. Right? Next one. ये तो बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, ये लिखते रहो. Skepticism also means giving reasonable assurance, not absolute assurance. Skepticism also means giving reasonable assurance, not absolute assurance. Please tell me why you can't give the absolute assurance? Because of these 3 reasons. Yesterday, बहुत सारे reason है, उसमें से 4-5 will write. Repeat the sentence. Skepticism also means giving reasonable assurance, not because of following reasons. Because of following reasons. Skepticism means giving reasonable assurance, not absolute assurance, because of following reasons. Following reasons. Point number 1. Sample testing. Point number 1. Sample testing. Second point, inherent weaknesses of internal control system. Inherent weaknesses of internal control system. अच्छा ये बताओ इसकी inherent weaknesses क्या है? Collusion and manipulation. अच्छा मेरे को ये बताओ, internal auditor company क्यों रखती है? Why do the company hire the internal auditor? To ensure that कि what weaknesses the external auditor should detect, that should be first detected by whom? Internal. And prevention is better than cure. But let's say for example, internal auditor did his work very properly, but management is now having a ego. Let's say for example, ये internal auditor है, ये मेरे पास आई, sir I would like you to tap my shoulder. मैंने कहा भाई
उन्होंने बोल रहे सर आई डिड माई जॉब इन अ वेरी ग्रेट मैनर. मैंने कहा हाउ? आई फाउंड आउट 200 frauds and errors. तो आई विल से नाउ यू विल टेल मी हाउ टू डू अ बिजनेस. Are you understanding the conversation? I hired her to let me know the frauds and errors, but when she is bringing me the frauds and errors, I'm manipulating her. Why? Because ego आ जाती है अंदर. कभी भी याद रखना, these are some of the inherent limitations which were there, which are there, and which will be there. ये बड़े जो लोग होते हैं ना, CEO, CFOs, they will never be able to understand कि they are also the human beings. They are not the available God on this planet. But they think that whatever their decision they will take is right. Even if the internal auditor is telling that, sir, there are frauds and there are errors in your decision, but they will not take it in a optimistic way or positive way. They will always take it in a egoistic way. And they will say, no, I am not wrong, you are wrong. That is called manipulation. And second thing, what I told you yesterday, example of factory, even if you keep 100 factories in the 100 people in the factories, what will happen? If they do what? Collusion. Then also there are chances of frauds and errors. So these are those kind of limitations which you can get away from the ICS or which will always be there. That is the reason second point we have written. Inherent weaknesses of internal controls. Bracket में लिख लो collusion and manipulation. Collusion, COLLUSION, collusion and manipulation. And most important, third point, non-availability of time, or you can write limited availability of time. Non-availability or limited availability of time with cost auditor. Limited availability of time with cost auditor. Fourth reason, most of the evidences are persuasive in nature rather than conclusive. Most of the evidences are persuasive in nature rather than conclusive. Persuasive in nature rather than conclusive. And fifth reason, some of the frauds and errors due to sample checking. Fifth reason, some of the frauds and errors due to sample checking will definitely remain. Some of the frauds and errors due to sample checking will definitely remain undetected and unchecked. करेक्ट है नहीं है? सर सोच के देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं. मेरे सामने 2 लाख सेल्स इनवॉइसेस है, मैंने 1,99,999 वेरीफाई कर लिए, एक भी फ्रॉड नहीं मिला. लास्ट इनवॉइस व्हेन इट वाज लेफ्ट, आई सेड द यार मेरे को थोड़ा लेजी हो रहा है, लेट्स लीव दिस इनवॉइस. इज देयर अ गारंटी दैट इनवॉइस इज फ्री ऑफ फ्रॉड एंड एरर? और देयर कैन बी अ फ्रॉड एंड एरर. चाहे आप 99.99% चेकिंग करो या 0.1% चेकिंग करो, एनीथिंग लेस देन 100% इज व्हाट? सैम्पलिंग. And due to the sampling, what happens? Some of the frauds and errors will definitely remain what? Undetected. These 5 reasons put together does not allow me to give a which assurance? Absolute. That is the reason we give a which one? Reasonable assurance. अब समझ में आया content of the topic? ठीक है? Next one. Okay. Further, the other next part. Put the heading. कितने points हो गए total? 5 ना? 6th point. नहीं, 5 पॉइंट्स तो इसमें, टोटल कितने में? मेन पॉइंट्स टोटल 5. नाउ राइट द 6th पॉइंट. द अदर लिमिटेशंस आर like non-availability of SAAE sometimes. Non-availability of SAAE sometimes. Other limitations are non-availability of SAAE sometimes, comma, incompetence of management, and unqualified staff.
and unqualified staff. Now total 6 points are over. Next point. The three elements of professional skepticism are, ये वाला point लिख रहे हैं अपन. The three elements of professional skepticism are, next point, 7th point. The three elements of professional skepticism are, first one, auditor attributes, comma, auditor mindset, third, auditor actions. Auditor attributes, auditor mindsets, and auditor actions, comma, these three put together required for audit quality. These three put together are required for audit quality. These three put together are required for audit quality. Maintenance. Okay. Last point. कितने टोटल कितने हो गए? 7. 8th point. Conclude करते हैं. Professional skepticism also helps in reducing the risk of under that A point, overlooking unusual transactions. If you remember, yesterday we have done the example for this insurance wala point. Right or not? If we'll remove this, the profit making company is turning into loss making. Professional skepticism also helps in reducing the risk of, under that A point, overlooking unusual transactions, overgeneralization in drawing conclusions. Second one, overgeneralization in drawing conclusions. Overgeneralizations in drawing conclusions. And the last one, using inappropriate assumptions. Overgeneralizations in drawing conclusions, using inappropriate assumptions. That's it. This is what do you mean by professional skepticism. Clear है? Audit risk materiality मैंने तुम्हें कल ही बताया था. The same relationship which we have between IR into CR with DR. Do you remember yesterday we heard about one topic called benchmarking? तो मेरे को ये बताओ, अगर आपका IR into CR ज्यादा है, if it is more, मतलब ROMAM is more, you would definitely would like to increase your what? Sample size increase होगा तो क्या होगा? Coverage. और अगर आपको coverage को increase करना तो benchmarking क्या करोगे? You will always keep the benchmarking as low as possible. So what is the relationship between the risk and benchmarking? Inverse relationship. Am I correct or not? So this is called the relationship between the audit. और मैं तुम्हें एक और example बताता हूँ. चलो एक practical example बताता हूँ by which you will understand it more clarity. Suppose he is a cashier in one company and she is also a cashier in one company. I am the auditor of both the companies. He has done a one-time fraud. Fraudulent fellow. So he has done a one-time fraud of 20 lakh rupees. How many lakhs? She is also cashier, but she is doing a daily fraud of 3,000. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जहां पे मेटीरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द अमाउंट इज बिगर वेयर हियर, बट ऑडिट रिस्क टू डिटेक्ट नॉन डिटेक्ट द सेम इज व्हाट? लेस. मेटीरियलिटी ज्यादा है, नॉन डिटेक्शन चांसेस आर लेस, क्योंकि हिज अमाउंट इज व्हाट? बिग. It will automatically catch your attention. But here
the frequency of the fraud is very high and the amount of the fraud is very less, there is a very fair chance that कि this fraud may not be what detected. लेकिन अगर आप 3 to 4,000 को 365 डेज से मल्टीप्लाई करो, वो भी अप्रोक्सीमेटली 13-14 lakhs का फ्रॉड होता है. तो क्या होता है, कई बार डेली फ्रॉड्स ड्यू टू मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वॉल्वमेंट आर वेरी इजी टू गेट हाइड, whereas a one time fraud of high value is very easy to what detect. तो यहां पे मेटीरियलिटी मोर है, ऑडिट रिस्क क्या है, लेस है. यहां पे मेटीरियलिटी लेस है, ऑडिट रिस्क क्या है, मोर. तो दिस इज ऑल्सो द वन वे बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड मेटीरियलिटी. ये अपन कैसे भी अपने को एक टॉपिक आएगा मेटीरियलिटी, उसमें अपने को लिखना ही है, तो वाई टू यूज द टॉपिक अगेन. So let's proceed with the last standard everyone which we are left with. What is the name of the standard? Knowledge of business, its process and its what? Environment. अगर आपको याद हो, ये स्टैंडर्ड का हाफ पोर्शन मैंने तुम्हें पहले लिखवा दिया था. Internal factors, external factors. Do you remember that? Acquiring the knowledge of client's business, how? Internal and external. उसमें if you remember, strength, weaknesses came in internal and opportunities, threats came in external. ये वही स्टैंडर्ड रेप्लिका है, वही एक वर्ड का. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉलेज ऑफ बिजनेस. इट मींस एन ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स व्हाट? प्रोसेस. मतलब आईसीएस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड इट्स व्हाट? एनवायरनमेंट. तो सपोज इफ दिस इज बिजनेस, दिस इज आईसीएस एंड दिस इज व्हाट? एनवायरनमेंट. तो ये हो गया एनवायरनमेंट, ये हो गया बिजनेस और ये हो गया उसका आईसीएस. तो यू शुड नॉट ओनली हैव द नॉलेज ऑफ बिजनेस, it's inside internals also and it's outside environment also. तो basically इसे AKOCB standard भी बोल सकते हैं. Acquiring the knowledge of client's business, including its processes and what? Business environment. बहुत easy standard है, आपने already करा हुआ है half of the standard. What is introduction? In performing an audit of cost statement, cost records and other related statement, cost auditor should have the knowledge of client's business to enable him to understand the processes and express his opinion on cost statement. Cost auditor's level of knowledge for the cost audit engagement should include general knowledge of the economy and the industry. बहुत सिंपल सी बात है. Let's say for example आपको बैंक ऑडिट अपॉइंट कर देते हैं, तो if you are a bank auditor, should you have the knowledge of RBI guidelines? तो आपको वो क्या बोलेंगे? What is that called? Industry knowledge. And you should also have the general knowledge of the economy. अब सोच के देखो, आप बैंक में जाके क्या वेरीफाई करोगे? What are the things you would like to verify in a bank audit? Just a simple question. आप उसके लोन्स चेक करोगे. लोन्स में सबसे पहले आपको चेक करना है एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. फिर आप उसका कस्टमर ज्वेलरी सेक्शन चेक करोगे, लॉकर सर्विसेज. आप बैंक में कैश होता है, कैश चेक करोगे. बैंक में सर्वेलेंस होता है, सर्वेलेंस चेक करोगे. तो आई नीड नॉट टेल यू ऑल दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो. तो दैट इज कॉल्ड विच वन? जनरल इकोनॉमी एंड विच नॉलेज? इंडस्ट्री नॉलेज विद इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स एंड मोर पर्टिकुलर ऑफ हाउ द एंटिटी ऑपरेट्स. मतलब लेट मी आस्क यू वन थिंग, अगर अपन बैंक्स में जाते हैं या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, विच लेवल ऑफ रैंक्स विल हैव मोर कंट्रोल्स इन हैंड्स? लोअर लेवल विल हैव द मोर कंट्रोल्स और हायर लेवल? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में 20,000 का डेबिट हो गया विदाउट योर नॉलेज एंड यू नो दैट दैट्स अ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन. यू वेंट टू द बैंक एंड बैंक में दो लोग बैठे हुए हैं, एक बैंक ब्रांच मैनेजर हु इज सिटिंग इनसाइड and the bank employee who is sitting outside. Whom do you think that you should approach for the reversal of the fraud? Branch manager or bank employee? Branch manager, क्योंकि उसका रैंक बड़ा है, तो he'll be having the more controls as compared to what? Branch employee. Branch employee will only be help you. हाँ sir, I can see that there is a transaction happened. That's it. If you'll ask him, na sir, please reverse my transaction, will he be able to help you out? No. Who will be able to help you out? ब्रांच मैनेजर, क्योंकि ब्रांच मैनेजर के पास अथॉरिटी है रिवर्सल करने की. उसको अकाउंटिंग करने की अथॉरिटी नहीं है. किसको? एम्प्लॉय को. ही कैन जस्ट शो यू व्हाट इज हैपनिंग, बट वेदर योर अकाउंट कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ होम? ब्रांच मैनेजर. तो उससे हम लोग बोलते हैं दिस पॉइंट, रीड दिस पॉइंट, मोर पर्टिकुलरली नॉलेज ऑफ हाउ द एंटिटी ऑपरेट्स. तो यू शुड हैव द जनरल इकोनॉमी नॉलेज, you should have the industry knowledge and more particularly about their ICS, internal control system. Objective. The objective of this standard is to enable the cost auditor to have the knowledge of client's business, which is sufficient to identify and understand the events, transaction and practices that in cost auditor's judgment may have a significant effect on the examination of cost statement or on the preparation of cost audit report.
अच्छा ये बताओ, whether the suppliers and customers affects the company? As an auditor, you should have the knowledge of suppliers and customers, and you should not. आप वाइजेक को ऑडिट कर रहे हो, should you know that from where it buys the raw material, and should you know its market where it sells it? So that is called environment knowledge. Which knowledge? ये outside knowledge है. Business knowledge, वाइजेक is a iron and steel company. वो आयरन एंड स्टील को मैन्युफैक्चर कैसे करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस नॉलेज. तो अंदर क्या है आईसीएस, बाहर क्या है बिजनेस, उसके वो ऊपर क्या है एनवायरमेंट. तो ये तीनों की नॉलेज होनी चाहिए आपको. नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन. सेम डेफिनेशन. व्हाट इज द फर्स्ट वन? इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन. अपने को डेफिनेशन पता है. व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन? अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, वेयर वी यूज एसटीडी एंड वेयर वी यूज टीईई. एसटीडी मतलब स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, वी डू इट इन स्ट्रेटेजी. और टीईई टाइमली, efficiently and effectively, we do it in planning. So what is the definition we are doing? Planning. Planning helps you in nature, timing and extent of ROMM by deciding your RAPs and FAPs. What is RAPs and FAPs? Risk assessment procedures, further assessment. And what is audit risk? Act of giving right opinion or wrong opinion when cost statements are materially misstated. It means what? It is a combination of two things, ROMM into detection risk. ROMM is nothing but IR into CR. So it is totally IR into CR into DR. What is IR? What is CR? Control risk. And what is DR? You can see that almost for the third time we are doing this topic. हमने पिछले चैप्टर में भी ये रिपीट किया. And who is the auditee? Your client is called the auditee. It means the company or an entity for which the cost audit is being carried. Who is the cost auditor? Who is a qualified member of the institute holding a valid certificate of practice. And what do you mean by overall audit strategy? अब बताओ, TEE or STD? Which helps you in scope, timing, direction of audit. मतलब thinking all about your resources. And what do you mean by risk assessment? How do you come to know about the client's risk? By understanding its entity, by understanding its environment, and most importantly in understanding its what? उसी से आपको client का क्या पता चलता है? ROMM. And when you come to know about the ROMM, you would like to increase it or reduce it? Reduce it to the which level? Lowest acceptable level. This process is known as what? Risk assessment. अब इसके मतलब same definitions है, not even a single definition is extra, which we have not done earlier. Or I think in the standard number 101, I have already made you write all those definitions. Next point. What is the requirement of this standard? ये standard क्या बोल रहा है कि cost auditor shall have the adequate level of understanding of the knowledge of business, its process and what? Business environment, so that he can give a which assurance? Reasonable assurance in order to express an opinion on cost audit. So let's understand what do you mean by entity and its what? Environment. The cost auditor should obtain the understanding of the following. Can you please open that topic which I made you write, internal external wala? I think we wrote it in 101 में लिखवाया था शायद. Acquiring the knowledge of client's business. उसमें हमने लेफ्ट साइड पे क्या लिखे थे? इंटरनल और एक्सटर्नल, और राइट साइड पे इंटरनल. ठीक है ना? अभी वो उसमें से ये बताओ, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल? ध्यान से बताते जाना. तुम बताओ नेचर ऑफ एंटिटी क्या है? इंटरनल. उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है? इंटरनल. वेस्टेजेस क्या है? इंटरनल. इंडस्ट्री क्या है? External. Regulatory, external. These all are known as which factors? External factor, including applicable cost and financial reporting framework. उसकी cost accounting policies क्या है? Internal. Objectives, internal. Strategies, financial performance, strengths, internal. Weaknesses, threats, opportunities, regulatory framework, legal framework, सप्लायर्स, कस्टमर्स. तो वही है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटरनल और ये हो गया अपना एक्सटर्नल. तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन इजीली कॉपी पेस्ट दिस टॉपिक ऑल्सो. ठीक है ना? तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट मींस यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. नेक्स्ट वन. नाउ थर्ड थिंग, एंटिटीज विद सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अब मैं तुम्हें ना 5 चीजें बताता हूं. दीज 5 थिंग्स आई विल टेल यू. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग?
control environment. What is the second thing? Entities risk assessment process. And what is the next thing? Information system and control activities and monitoring. Actually, पहले तो एक काम करो. This is the only topic. I think we have to do more here. इसके notes भी है मेरे पास. If you want to write down the notes, हम लास्ट में लिखेंगे, पहले इसे समझ लेंगे. The name of the topic actually is known as components of internal control system. What do we call it as? Components of internal control system. Let me show you. Here. Here. Can you please tell me what are the 5 things we have seen in the material? Here देखो. Let me make you first understand what are the 5 things we are doing. What is the first thing we are learning? So you can see that the first one you are able to see below is control environment. Second one is what? Risk assessment procedure. What is the third one? Third one is cost information system. Information system. Fourth one is what? Control activities, control, and the last one is what? Monitoring. अभी देखो ये पांचों चीजों को मिला के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनता है. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ मिक्स ऑफ व्हाट? 5 थिंग्स. पहले तो इसको नाम याद करो. पहला है सीई. व्हाट इज सीई? कंट्रोल एनवायरनमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एनवायरनमेंट? रीड. Cost auditors shall evaluate whether the management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior or not. पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं इसका मतलब क्या है. देखो, what is the difference between Reliance and Tata's? बस ये difference बताओ बस. If you will be able to tell me the difference between the two, control environment में clear difference पता चल जाएगा. अगर मैं तुम्हें option दूं, who is a businessman and who is an industrialist? Reliance is what? Businessman. And Tata's is what? Industrialist. Tata always believes in upliftment of the country. इसका मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को ऑब्वियसली पैकेजेस अच्छे देता है, बट उसके साथ मॉरल वैल्यूज भी देता है. मतलब इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. इफ यू वांट योर एम्प्लॉयज टू बी मॉडेस्ट, ऑनेस्ट एंड एथिकल, यू हैव टू डिस्प्ले द पिक्चर फर्स्ट. अब मेरे को बताओ, मैनेजर और लीडर में डिफरेंस क्या होता है? मैनेजर और लीडर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आई एंड वी. लीडर ऑलवेज यूजेस द विच लैंग्वेज? वी. और मैनेजर हमेशा आई. हु इज अ ब्लेम टेकर? लीडर. हु इज अ ब्लेम गिवर? हु इज अ क्रेडिट गिवर? लीडर. एंड हु इज अ क्रेडिट टेकर? तो लाइफ में कभी भी बनना, बट मैनेजर मत बनना. Are you gonna whatever you want to become in your life, but don't be a what? Manager. Be a what? Leader. That is what Ratan Tata tells. ये पूरे वर्डिंग्स रतन टाटा के. उन्होंने क्या कहता है? अपनी कंपनी में मॉरल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है. And you won't believe, more than half of the year he spends with the laborers instead of being sitting in a AC room, because he knows that the root cause of the problem always comes from the lower level management, not from the upper level. जो वो भट्टी में आयरन एंड स्टील को, जो टाटा स्टील की बॉयलर में और फर्नेस में, द वन हु इज सिटिंग देयर एट द 1200 डिग्री सेल्सियस, दैट पर्सन नोज हाउ द हॉट क्लाइमेट लुक्स लाइक, नॉट द पर्सन हु इज सिटिंग इन द एसी रूम. तो वो बिलीव करता है इंडस्ट्री में. लेकिन अगर आप रिलायंस की किसी भी कंपनी में चले हो, यू विल ऑलवेज फाइंड द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इन दैट. रिलायंस ऑलवेज बिलीव्स दैट कि ही इज अ मास्टर एंड यू आर वर्किंग अंडर हिम एज अ व्हाट? सर्वेंट. कभी भी याद रखना, आप पूरा after getting qualified, when you will be sitting in your campus placement, you will find that 90% of the professionals get attracted to Tata group of companies rather than what? Reliance. क्योंकि हम लोग पैसा तो कमा ही लेते हैं, मेन क्या होता है? अपनी इज्जत. मेन होती है अपनी रिस्पेक्ट. अपने को रिस्पेक्ट टाटास ग्रुप ऑफ कंपनीज में ज्यादा मिलती है. आज भी मोमेंट पे अगर मैं अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दूं और टाटा मेरे को अच्छी जॉब ऑफर करे, तो आई वुड लव टू गो टू टाटा rather than what? Reliance. Even though I know that Reliance is more profit making. Reason is very simple, क्योंकि control environment is better in case of which group of companies? Tata. वैसे ही आपको हर एक कंपनी का अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लर्न करना है, if you want to learn the internal control system of Vizag steel plant, तो you should know that कि how control environment is working. Are their employees ethical and honest or not? And they will become ethical and honest only when the top level management will be involved in it.
क्योंकि एवरी जूनियर ऑलवेज लुक्स एट इज व्हाट सीनियर, जो सीनियर डिस्प्ले करता है वही जूनियर उसको ओबे करता है. तो रीड द पॉइंट नंबर 1 नाउ. What is control environment? Cost auditor shall evaluate whether who management has created and maintained a culture of what? Honesty and ethical behavior. उससे आपको पता चलेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गुड है या नहीं. देखो बहुत सारी बातें होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं तुम्हें आई विल नॉट पुट यू ऑन टू द डार्कर साइड. अब हम जब प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हैं ना, सो मेनी क्लाइंट समटाइम्स कम्स टू अस. अब क्लाइंट्स हमें डायरेक्टली आके ब्राइब करते हैं. लेट मी टेल यू स्ट्रेट अवे. हमें क्लाइंट्स आके ब्राइब करता है, हमें बोलता है सर मेरे को 100 करोड़ का कैश क्रेडिट लोन चाहिए. अगर आपने लोन दिलवा दिया तो 5% आपका. तुम सोचो 100 करोड़ का 5% कितना हुआ? 5 से. अब ये इजी अपॉर्चुनिटी आपको बिग मनी बनाने की, लेकिन हम लोग ऐसे असाइनमेंट को दूर से मना कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत एथिकल है, हमें फ्रॉड नहीं करना. हम लोग भी डिसऑनेस्ट है थोड़े से, हम लोग भी अनएथिकल है थोड़े से, लेकिन इतने भी नहीं कि बैंक का 100 करोड़ रुपए खा जाए. अगर मेरे को पता है कि माय क्लाइंट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिटर्निंग द मनी एट द व्हाट लेटर स्टेज, आई विल डेफिनेटली विल नॉट हेल्प माय क्लाइंट इन गेटिंग 100 करोड़. रीजन इज वेरी सिंपल. क्योंकि पीपल लाइक मी who are also having the parents and you are also having the parent, your mother or father might be having the account in that bank. उसका पैसा अगर मर गया तो इट विल बी लाइक जनरल स्कैम. हो सकता है कि मेरे किसी रिलेटिव का ही अकाउंट हो वो बैंक में, क्योंकि 100 करोड़ रुपए का स्कैम होना इज नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच. थिंक फ्रॉम द ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लाइंट की हेल्प नहीं करते, हम लोग हेल्प करते टू एन एक्सटेंट, जहां पे हमें भी लगे कि ठीक है यार, अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके क्लाइंट इज स्ट्रॉन्ग, just because some minor irregularities are there, if you can make it regular and the bank is ready to give the loan, then we take up this such kind of assignment. Client पूरा ही fraud है, पूरा ही errorful है, और we are telling to the bank भाई इसको लोन दे दो. We can do, ऐसा नहीं है कि we can't do, but we don't do it, क्योंकि इतने से ethics तो अपने अंदर भी होते हैं. सीधी सी बात है. तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम कंप्लीटली एथिकल, आई एम कंप्लीटली ऑनेस्ट व्हेन इट कम्स टू माय प्रैक्टिस प्रोफेशन. नहीं, हम लोग भी थोड़ा बहुत इवेजन ऑफ टैक्सेस करते हैं, हम लोग भी प्लानिंग ऑफ टैक्स करते हैं, हम लोग क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द टैक्सेस. बट दैट डजंट मीन दैट वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ पेइंग द टैक्सेस. मैं खुद टैक्स पे करता हूं, लेकिन ऑब्वियसली आई डू नॉट पे दैट मच ऑफ टैक्सेस व्हिच आई शुड पे. क्योंकि एक तो इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल पे द टैक्सेस, व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल आई एम सेटिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड. व्हाई दे विल कम टू माय ऑफिस? सपोज तुम मेरे ऑफिस आते हो टैक्स बचाने के लिए, तुम्हें पता चले कि आई एम पेइंग माय 100% टैक्स, तो तुम बोलेंगे जो अपना नहीं बचा सका वो मेरा क्या बचाएगा? करेक्ट है नहीं है? तो भैया ऐसा नहीं है कि वी डोंट पे, वी पे, बट टू दैट एक्सटेंट ओनली विच वी थिंक दैट इज राइटफुल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एथिकल और ऑनेस्ट नहीं होते, वी आर, बट यस, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ इज रिक्वायर्ड. तो ऑर्गेनाइजेशन टाटास में यू विल नेवर हियर द वर्ड कॉल्ड टाटास इन एनी काइंड ऑफ न्यूज इन इंडिया. कभी भी देख लो, पिछले 15 साल के न्यूज़पेपर उठा लो, कहीं पे भी एक बार हुआ था जब टाटा और कोरस का स्टील डील हुआ था 2008 में. देन द न्यूज़पेपर पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट कि टाटा बीइंग अ वेरी स्मॉल कंपनी, हाउ दे कैन कंज्यूम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉल्ड कोरस, यूरोपियन कंपनी. लेकिन उसमें भी टाटा ने 2 साल में $52 बिलियन का लोन जो उसने लिया था रीपेड इट विद इन 2 years. Whereas the term was for 10 years. 8 साल प्री पे कर दिया था. उससे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट दे है. तो हम लोग जब टाटा कंपनीज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जाते हैं, हमें उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है. द रीजन, इट इज ऑलरेडी वेरी मच एथिकल, इट इज ऑलरेडी वेरी मच व्हाट ऑनेस्ट. तो द फर्स्ट थिंग इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यू शुड हैव द नॉलेज इज इट्स व्हिच एनवायरनमेंट कंट्रोल. इन सेकंड क्या है? अब मेरे को ये बताओ, if auditor comes, he finds your risk, he assesses it, he reduces it to the lower level. This is the one situation. But don't you think that before the auditor comes to your place, you should have your own risk assessment process in the organization? हम लोग इंटरनल ऑडिटर को हायर क्यों करते? मैंने अभी पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले भी. Why do we hire? Because prevention is better than. So don't you think that the client should have its own risk assessment procedure instead of waiting for the auditor? क्योंकि if the auditor will find your ROMM, he will definitely give a negative opinion. But if you will find out your ROMM at the early stage, will you have enough time to rectify it before the auditor comes or not? So which one is better? Getting it identified by the auditor or getting it identified by yourself?
अगर आपको खुद की गलती खुद ही पता चल जाए एट अर्ली स्टेज, आई डोंट थिंक सो दैट यू विल गेट एनी चांस ऑफ गेटिंग द नेगेटिव ओपिनियन इन दैट केस. उसे बोलते हैं एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रीड द पॉइंट नंबर 1. What the company should do? A company should first identify its what? देखो सर, सीधी सी बात है. मेरे को ये बताओ, आप ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको अपनी कंपनी का रिस्क पता है? प्लीज टेल मी व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ योर बिजनेस. यू आर स्टार्टिंग अ ज्वेलरी बिजनेस. थेफ्ट और volatility in prices, and you need a qualified or unqualified people. Security is the biggest issue. So when you your own, if you will identify your risk, so would you like your risk to be told to you by someone, or you would like to identify on your own? This is the point number 1. Identifying the business is relevant to the cost reporting objective. Second thing, assessing the likelihood of their occurrence. अच्छा, मान लो एक एवरेज ज्वेलरी शॉप में एक अटेम्प्ट होता है ईयरली फॉर अ थेफ्ट एंड ऑल. तो डू यू ऑलरेडी नो द लाइकलीहुड ऑफ इट्स अकरेंस और नॉट? यस, दैट इज पॉइंट. द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. इज दिस अ ह्यूज रिस्क और द लेस रिस्क, उसको एस्टिमेट करना है. एंड फाइनली डिसाइडिंग अपॉन एक्शंस टू एड्रेस. ये सेम चीज ऑडिटर भी करता है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि डू यू वांट to get it done by the auditor, or you want to do it on your own? That shows that you are a good ICS or a poor ICS. Good ICS. So what are the 4 things every organization should do? Identify its own business risk, and second, assess its what? Occurrence. Next one, estimate the significance of that risk and try to reduce it to the which level? Lowest level, by responding to such risks. उसे हम लोग बोलते हैं taking the actions. तो ये चीज इंस्टेड ऑफ ऑडिटर शुड डू, इट्स बेटर दैट कंपनी शुड डू. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द सेकंड थिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट. अब देखो, ध्यान से सुनो, कंपनी के रैप को और ऑडिटर के रैप को 2 डिफरेंट थिंग्स बोलते हैं. अपने रैप को क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है कि व्हेन आई एम कमिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन आई विल डेफिनेटली असेस योर रिस्क, बट यू वांट टू गेट इट असेस बाय मी और बाय योर ओन सेल्फ. तो इसलिए कंपनी को अपना रैप डालना चाहिए. व्हाट इज कंपनीज रैप? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. तो रैप, विच रैप इज बेटर? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज बेटर देन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. तो व्हाट आर द 2 थिंग्स इन द ICS you should know? Control environment, risk assessment. What is next one? Information system and management information system. मैं बहुत सिंपल से तरीके से पूछता हूं, ध्यान से सुनो. मान लो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हूं और ये मैडम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर. अब आपके टीम में 50 स्टाफ मेंबर्स हैं. हाउ मेनी? ईच मेंबर कैन सेल 10,000 प्रोडक्ट्स इन अ ईयर. तो टोटल आपकी कैपेसिटी कितनी हुई? बट आई डोंट नो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, मैंने 10 लाख यूनिट्स वो कर दिए मैन्युफैक्चर, विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैन फोर्स कितनी है? 50 into 10,000 makes it to 5 lakh. It means, what about the overstocking? Did I do the overstocking of 5 lakhs or not? Why it has happened? Due to the poor communication between the 2 departments. तो कभी भी याद रखो, आपकी डिपार्टमेंट की जो स्पाइन है, एवरी कंपनी स्पाइन इज इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. विच सिस्टम? जैसे मैंने तुम्हें P2P ऑपरेशन बताया था, जैसे ही MRN होता है वैसे ही हम लोग, जैसे रीऑर्डर लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है, वी जनरेट MRN. MRN के बाद वी जनरेट द टेंडर. टेंडर से वी प्लेस इट, वी सिलेक्ट द बेस्ट वन, वी डू द क्वालिटी इंस्पेक्शन, स्टॉक फिनिश, वी गिव अ चेक टू द सप्लायर, सप्लायर पुट्स इन बैंक एंड बैंक इज व्हाट? पेमेंट. ये ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिकली होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. जैसे एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज टुडे राइट नाउ आरबीआई एक डिक्लेरेशन करता है 12/35 को. व्हाट इज द डिक्लेरेशन? कि भैया एफडी के रेट्स हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 8% to 9.5%. You know that within 5 minutes, all banks in India will have that information on their desk. How it is possible? 1.5 लाख से ज्यादा ब्रांचेस है इंडिया में बैंक्स की, comprising of all banks. आरबीआई ने एक डिसीजन लिया. How within 5 minutes all the banks know that decision? Centralized communication system. What do we call it as? आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कंपनी के अंदर क्विक, रिलायबल और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए. एंड दैट शुड बी वेरी मच क्विक इन नेचर. इतना क्विक होना चाहिए कि देट शुड नॉट बी डिले. द लेस डिले इज इक्वल टू लेस रिस्क, इज इक्वल टू लेस स्पॉइलेज, इज इक्वल टू लेस लॉस. तो व्हाट इज द थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी कंपनीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. रीड दिस पॉइंट.
Cost auditor shall obtain the understanding of the information system, including management information system, the class of transaction and their analysis. They are significant to cost statement. Procedure by which those transactions and their analysis are what? Initiated, recorded, processed, and reported. Should you think that there should be a huge gap between the all four, or there should be least gap? In the management information system and cost management, related cost accounting records supporting information that are used to initiate, record, process and report transaction, and the reporting process used to prepare entities cost statement, including significant estimates and disclosure. चलो मेरे को ये बताओ, suppose you went to one ATM, आपने 5,000 withdraw करे, immediately in the next second you want to verify your bank statement. Should it be updated? कैसे अपडेट होती है? आप तो कश्मीर में पीएनबी का एटीएम यूज कर रहे हो, वेयर एज इन हैदराबाद यू हैव आईसीआईसीआई बैंक, आपका अकाउंट हैदराबाद में है, आईसीआईसीआई बैंक में है, यू आर राइट नाउ इन कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में पीएनबी का एटीएम यूज कर रहे हो बाय यूजिंग योर आईसीआईसीआई, हाउ विद इन अ नैनो सेकंड योर मिनी स्टेटमेंट इज अपडेटेड. इसे बोलते हैं ऑनलाइन रियल टाइम अपडेशन. व्हाट डू वी कॉल? ऑनलाइन रियल टाइम. जैसे ही आपने ट्रांसैक्ट, मेरे ख्याल से अभी तक मशीन से पैसे भी बाहर नहीं आते, आपको मैसेज पहले आ जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन व्हाट? डेबिटेड. टिल द टाइम दैट मशीन इज कैलकुलेटिंग एंड कीपिंग द मनी आउट, बिफोर दैट ओनली यू विल गेट अ मैसेज. इसे बोलते हैं क्विक इंफॉर्मेशन सिस्टम. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज द थर्ड sign of a good ICS. So what are the three signs of a good ICS? A good control environment, a good risk assessment process, and a good information system. What is the next thing? Control activity. अच्छा ये बताओ, आप फोन पे लॉक क्यों लगाते हो? Privacy. If I am not wrong, everyone has their own privacy. चलो आप फोन पे लॉक भी नहीं लगाते, ऐप पे तो, गूगल पे, फोन पे तो लॉक लगाऊंगा पक्का. उसके बाद लॉक खोल के आप गूगल पे, फोन पे खोल लेते हो. उसके बाद फिर यूपीआई पिन होता है, सेकेंड पिन, वो क्यों होता है? फिर सेफ्टी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसे बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज. विच एक्टिविटीज? एंड इफ आई विल आस्क यू, वेयर इट इज इजियर टू डू द डमी अटेंडेंस, इफ यू आर टेकिंग इट ऑन मैनुअली और इफ इट इज अ बायोमेट्रिक. मैनुअली में आप डमी लगा सकते हो, बायोमेट्रिक में उसका थंब कहां से लेके आओगे? इफ दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल, ऑब्वियसली थंब विल आल्सो बी नॉट अवेलेबल. तो बायोमेट्रिक में चांसेस ऑफ प्रॉक्सीज आर हायर और लोअर. उसे बोलते हैं कंट्रोल. हायर, लोअर. उसे बोलते हैं विच एक्टिविटी? अम्मा सस्ते नशे, क्या आप फूक के बैठे हो? हाँ, खाना खाया ना? डोंट वरी, 1 o'clock को मिल जाएगी ब्रेक, ठीक है ना? उसको खाना चल रहा है इसलिए उल्टा बोल रही है. तो टेल मी, विच वन इज रिक्वायर्ड इन, व्हाट इज द फोर्थ एलिमेंट विच यू नीड इन अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल है. चलो हमने कंट्रोल भी कर लिया, रैप भी डाल दिया, और उसके अंदर मतलब ये मैगी बन रही है अपनी. अ गुड मैगी इज द वन विच इंक्लूड्स मैगी, विच इंक्लूड्स वाटर, a good proportion of masala and tadka and vegetables and all. तो एक और last vegetable रहेगा, that is called monitoring of what? अच्छा ये बताओ, once you have installed the internal control system, will it work for 10 years without updation, or you need to update it? I think if it is not updated, it is out of the market. Yes. देखो सर, हम अपने एंड्रॉइड फोन और आईफोन को भी अपडेट करते हैं टू द न्यू वर्जन whenever any new iOS comes. Am I correct? When we update our things, it's better that you should update your what? कंट्रोल्स. उसे बोलते हैं मॉनिटरिंग. अच्छा कैसे करते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने Amazon से एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, यू गॉट द डिफेक्टिव पीस, आपने इमीडिएटली रिक्वेस्ट रेज करी फॉर द रिटर्न और रिफंड. उन्होंने बोल रहे रिफंड नहीं होता, तो आपने क्या बोला, चलो एटलीस्ट क्या कर दो, रिटर्न. आपने कस्टमर केयर को कॉल किया, ऑर्डर आईडी बताया, सर ये मेरा गुड्स आए हैं, ये डिफेक्टिव है, आई वुड लाइक टू रिटर्न इट. आपने पूरी कॉन्वर्सेशन करी, ही हैंडल योर थिंग वेरी केयरफुली. उसके बाद लास्ट में आके यू आस्क्ड सम क्वेश्चन विच ड्यू टू विच द कॉन्वर्सेशन हैज गॉन बैड, और सडनली आपको एक मैसेज आता है, हाउ डिड यू फील व्हाइल टॉकिंग टू आवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव. उसमें आता है स्केल 1 to 10 में आप हमें मांग दो, 10 मोस्ट सेटिस्फाइड एंड 1 लीस्ट सेटिस्फाइड. आप 1 ही दोगे. अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कस्टमर फीडबैक. दैट इज कॉल्ड व्हाट? अब मेरे को ये बताओ, अगर उसको ये 1 मिला है, will it be good for him? It is good not for him, but for the company it is yes. क्योंकि कंपनी को पता चल गया कि which employee to keep, which employee not to keep. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. आप अपने कंट्रोल्स को अच्छे से मॉनिटर करके रखो, अपडेट करके रखो, अपग्रेड करके रखो, मेक इट मोर यूजफुल.
Because you all know that technology is something which is changing at the very rapid pace. And your control should also change accordingly. सबसे पहले अपन नोकिया का फोन यूज करते थे, एम आई करेक्ट ना? ऊपर स्टार है, नीचे हैश. फिर हमने वो फोन लॉक शुरू किया, फिर हमने वो पैटर्न शुरू किया, आर ए हार्ट, वो बनाना, वो पैटर्न वाले. फिर अपना क्या है, फिंगर लॉक आया. अभी अपना क्या है, फेस लॉक. यू नेवर नो, ब्लड सैंपल आ जाएगा. तुम ऐसा फोन दबाओगे, इससे से पिन निकलेगा, ऐसा करोगे, तुम्हारा शुगर टेस्ट भी हो जाएगा फास्टिंग में, और फोन भी अनलॉक हो जाएगा, डीएनए भी हो जाएगा वहीं पे. यू नेवर नो ना टेक्नोलॉजी. तो हम लोग वी वुड लाइक टू गो टू अ बेटर टेक्नोलॉजी और द ओल्डर वन. For that, you need to always keep an eye over your controls. Make sure that they are always updated and upgraded. So, what are the 5 things you need in an internal control system to make it best? A good control environment, a good wrap system, a quick information system, a most having the good control activities and keep on monitoring to regularly update it. These 5 features put together is known as a good internal control system. That is how auditor should acquire the knowledge. देखो, entity knowledge और environment knowledge मैंने तुम्हें already लिखवा दिया था, internal as well as what? External. Internal control system का pending था, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया. Next point. IT, information technology and control के अंदर क्या relationship है? अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ 298 into 362 मल्टीप्लाई करूं, सबने कैलकुलेटर निकाला, इसे बोलते हैं यूज ऑफ आईटी. ये लाइव एग्जांपल था टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? तो यूज ऑफ आईटी इन द विच सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल से. क्योंकि आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं है, यू वुड लाइक टू हैव अ मोर फेथ ऑन अ व्हाट, कैलकुलेटर रादर देन योर ओन कैलकुलेशंस. दिस इज कॉल्ड द यूज ऑफ आईटी इनटू विच सिस्टम, internal control system. Does it make your processing of transaction very quick, more reliable? That is what is written. Read this. The cost auditor shall evaluate and assess IT architecture, systems and programs. अच्छा मेरे को ये बताओ, let's say for example आप एक कंपनी को ऑडिट करते हो, कॉस्ट ऑडिट. वाइजेक स्टील प्लांट ओरेकल बान ERP 2.78 सॉफ्टवेयर यूज कर रही है. You know, have you heard of this software? कभी सुना है सॉफ्टवेयर? सिर्फ नाम सुना होगा, but do you know how to operate it? तो how you will check? इसे बोलते हैं understanding the knowledge of what? IT structure and its what? Systems and its what? Programs in use in the what? Entity. अगर आपको क्लाइंट के IT environment के बारे में पता करना है, तो you have to first do the R&D on the same. आपको पता होना चाहिए what are the softwares available. जैसे मैं जब फाइनेंशियल ऑडिट करने जाता हूं, हमें मालूम है कि मार्केट में 9 सॉफ्टवेयर हैं. ओरेकल है, बान है, टेली है, ERP है, क्विक बुक्स है, फोकस है, विंग्स है, बिजनेस है. ये यही सॉफ्टवेयर है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है. एंड दीज सॉफ्टवेयर का जो रीडेबल वर्जन है वो मेरे पास ऑलरेडी है. इट मीन्स आई हैव द कैपेसिटी टू नो दिस सॉफ्टवेयर. तो इफ माई क्लाइंट इज यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू द ऑडिट. बट सपोज सडनली क्लाइंट ने अपना सेल्फ मेड सॉफ्टवेयर बनवाया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर विच आई डोंट नो, इन दैट आई विल फाइंड अ डिफिकल्टी. डिड यू गेट द पॉइंट? तो बिफोर अप्लाइंग योर कॉस्ट ऑडिट ऑन द क्लाइंट्स IT environment, you should have first have the knowledge of its which structure, IT architecture, its systems and its what? Programs. Second thing, controls on access to data. आप अपने क्लाइंट से पूछो कि ये लोअर लेवल एम्प्लॉय का कितना एक्सेस है और हायर लेवल एम्प्लॉय का कितना एक्सेस. जस्ट नाउ आई आस्क्ड यू, हु इज हैविंग द मोर कंट्रोल्स इन अ बैंक एम्प्लॉय और अ ब्रांच मैनेजर? तो आपको कंट्रोल्स ऑन एक्सेस टू डेटा यू शुड नो. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कंट्रोल्स ऑन चेंजेस टू डेटा. यू शुड ऑल्सो नो कि हु हैज द कंट्रोल्स टू चेंज द मास्टर डेटा एंड हु. अच्छा मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. डू आई हैव एन एक्सेस टू दिस कंप्यूटर? नहीं, मेरे को एक्सेस नहीं है. एक्सेस इज ओनली गिवन टू दैट पर्सन. तो मतलब हु कैन मेक द नेसेसरी चेंजेस इन द डेटा, इन द रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग? द वन हु इज ऑथराइज्ड और वन हु इज अनऑथराइज्ड. तो आपको थर्ड पॉइंट वही है, कंट्रोल्स ऑन चेंजेस टू डेटा इन द विच फाइल्स? मास्टर फाइल्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रिटी ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन एंड सिक्योर्ड. आपका IT एनवायरनमेंट कितना सिक्योर्ड है? व्हाई डू वी पुट द एंटीवायरस इन आवर कंप्यूटर्स? टू प्रोटेक्ट आवर डेटा और टू अलाउ आवर डेटा टू गेट हाईजैक्ड. तो
तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपका डेटा कितना ऑनेस्ट है और आपने उसके ऊपर कितनी सिक्योरिटी डाली हुई है. That is how internal control system is connected with IT environment. So what are the four knowledges you should have before entering into the client's place? उसका IT structure, उसका system, उसका program. Second, who has the controls over the access of data? Who has the controls to tamper or change the master file? And what is the integrity of the information? अच्छा ये बताओ, information और data में difference क्या है? Raw is known as what? Data. What meaningful thing we get out of it is called. जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करके पूरी सॉइल अपने को यूजफुल है, सॉइल में जो गोल्ड है, गोल्ड, दैट गोल्ड इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ड्यू टू विच वी डू द फुल माइनिंग. वैसे ही एक अपने आईटी इन्वायरमेंट में कॉन्सेप्ट होता है डेटा माइनिंग. व्हाट डू वी कॉल इट एज? डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है? इतने सारे डेटा में, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20,000 डेटा पार्टीज आर देयर, but I am looking for those debtors who are pending for more than 180 days. What is the information I am looking for? All the debtors or some of the debtors who are pending for more than? अब क्या टूल है मेरे पास? I will use data analytics और data mining software. मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया और मैंने कमांड दे दी, give me the list of all the debtors which are pending for more than 180. वो पूरा 20,000 में within a nanosecond will give me the list of 10 to 12 people who are pending for more than, क्योंकि I was looking for bad debts which are pending for more than 180 days means more chances of bad debts or less chances? More chance. ऐसे हम लोग filtration करते हैं. This is how we do the sampling. We take a very calculated risk. हम लोग मैनुअल से ज्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड रहते हैं, क्योंकि we know that कि humans are a statue of errors. We can make some errors, but mechanics में, in the electronics, the chances of errors are very least. इसलिए इट्स बेटर दैट, जब मैंने तुम्हें कैलकुलेशन पूछा, यू ऑल्सो टुक आउट द कैलकुलेटर फर्स्ट और नॉट, क्योंकि आपको लग रहा था कि ओन करने में टाइम भी लगेगा और हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कैलकुलेटर गलत नहीं हो सकता. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक व्हेन वी एंटर द हुज प्लेस, क्लाइंट साइड. तो टेल मी लास्ट टाइम, व्हाट आर द फोर थिंग्स यू शुड नो? आईटी आर्किटेक्चर, सिस्टम प्रोग्राम्स, who has the control to access the data, who has the controls to change the data, and what is the integrity of the information and security of the data. Now, after doing all these things, you will be able to finally identify the ROMM. What is ROMM? अगर ये सारी टेस्टिंग करने के बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज पुअर, इसका मतलब ROMM इज हायर. और ये सब कुछ करने के बाद if the internal control system is best, it means the ROMM is less. Did you get the point? उसे बोलते हैं next para. Identifying and assessing the ROMM. The cost auditor shall identify and assess the risk of material misstatement as the cost statement level and at assertion level, including the cost heads and disclosure thereof. For this purpose, cost auditor shall, point number 1. ये अब देखो, कंपनी का रैप बताना क्या 4 पॉइंट्स है उसमें? कंपनी का रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में वो भी आइडेंटिफाई करती है, फिर असेस करती है, फिर अंडरस्टैंड द लाइकलीहुड एंड रिस्पॉन्ड. हम लोग भी वही कर रहे हैं. रीड द पॉइंट नंबर 1. आइडेंटिफाई द रिस्क इंक्लूडिंग द रेलेवेंट कंट्रोल्स. फिर हमने क्या किया? assess whether the risk is related to recent significant economical or accounting change. What is the third thing? Assess whether the risk involves significant transactions or not. Then assess the degree of subjectivity in measurement of information related to the risk. And last but not the least, assess whether there arises a need for revising the assessment of risk based on additional audit evidence. हम लोग जब ऑडिट करते हैं ना, ध्यान से सुनना, when we do the audit na, you never know, sometimes so many times duplication you have to do. जैसे क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं. Client is giving you one information on the day 1 but completely opposite to that on the day 15. मतलब day 1 को उसने आपको इंफॉर्मेशन दी और day 15 को सेम इंफॉर्मेशन when you are asking, it is changed. Why? He has an access to change the master files. He has an access to change the. अब मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है रेड, RAID. Have you heard of the word raid? Why do we put raid? तो सुना होगा, नॉर्मल रेड, रेड मारना बोलते ना हम लोग, तो आईटी वाले रेड मारते हैं. What do the IT people do? They identify the disclosed cache और undisclosed. वैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर करता है. अब सुनो, मान लो मैं आपके टैली सॉफ्टवेयर पे आया, आपको पता चल गया रोहित सर आ रहे हैं, अपने 100 एंट्रीज ऐसी थी which were fraudulent, you immediately deleted it. आपने रिसाइकल बिन भी एम्प्टी कर दिया.
तुम्हें पता है टिल द टाइम you do not delete the same entry for 25 times in your computer, same computer, I can regenerate it. 25 times आपको एंट्री डालना डिलीट करना, डालना डिलीट करना, like that you have to do it for how many times? After that only permanently the entry gets deleted from your computer. अब ये आपको पता है, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यू विल ऑल्सो बी द ऑडिटर इन फ्यूचर। मेरे को पता क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर की फीचर है। अब ये क्लाइंट को नहीं पता। क्लाइंट को क्या लगता है कि उसने 10 बार भी एंट्री डिलीट कर दी, रोहित सर को पता नहीं चला। हम लोग सिंपल अपना रेड सॉफ्टवेयर आके उसके एप्लीकेशन के ऊपर डालते हैं और रेड सॉफ्टवेयर सारी डिलीटेड एंट्रीज का लिस्ट दिखा देता है। हमें वहीं पे पता चल जाता है कि क्लाइंट ने फ्रॉड्स एंड एरर्स करे। अब दिस इज द सॉफ्टवेयर वी हैव डेवलप्ड टू challenge the client's deletion to the master files. Ab obviously when the accounting is getting automated, our auditing should also get what? Automated. क्योंकि अगर वो ऑटोमेटेड जा रहे हैं तो हमें भी तो ऑटोमेटेड जा। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है लाइक स्कार्फ, स्नैपशॉट, आइडिया, ठीक है ना, ये रेड, ये सॉफ्टवेयर, ये हमारे दीज आर कॉल्ड कार्ट। इनको हम लोग कार्ट बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। व्हाट डू वी कॉल देम? कार्ट। ये अपने को चैप्टर भी है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसमें अपन पढ़ेंगे कार्ट टेक्निक्स, बट आई एम गिविंग द आइडिया सो दैट टाइम इट शुड नॉट लुक एलियन टू यू। ठीक है, दिस इज अवर रैप्स। तो व्हाट इज अ क्लाइंट्स रैप फुल फॉर्म एंड अवर रैप्स फुल फॉर्म? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट वन, सब कुछ करने के बाद तुम्हें पता है अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, विच यू नीड टू प्रिजर्व फॉर 10 years and what is the assembling time? 60 years. क्या क्या अपन डॉक्यूमेंट करेंगे? What are the things we'll document? See, key elements of the understanding obtained regarding each and every aspect of the entity. क्योंकि if you will document this, next year you do not have to do the hard work again. आपको उतना हार्ड वर्क जो आपने फर्स्ट ईयर में कर लिया, that same hard work you need not do in the which year? Second year. It will be better in what? Third year and far better in fourth year. Did you get the point? So always remember, document everything and its environment specified in 5.1 and 5.2 above, and each of the internal control components. What are the 5 components of internal control system? Control environment, wrap, फिर control activities, monitoring of controls, और एक था अपना information system. सबको रिकॉर्ड करके रखो, and then sources of information from which understanding obtained and the wrap procedures performed. Identified and assess ROMM at the cost statement level and financial statement level, and risk identified related controls about which the auditor has an understanding. All these 3 things you have to document. अच्छा, इसका फायदा क्या होगा डॉक्यूमेंट करने का? Next year when you will do the audit again in the future, you will be having a more better understanding because you need not spend the time again what you have done in the last year. And finally we are on the which one? Application guidelines. Application guidelines में read they are saying what? चलो एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें कंपोनेंट्स लिखा देता हूँ, अदरवाइज इट विल बी पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट डे। रीड द पुट द हेडिंग। क्या हेडिंग डाला हमने? व्हाट इज द हेडिंग? वी हैव नॉट पुट द हेडिंग। पुट द हेडिंग CAS 104। नेम ऑफ द स्टैंडर्ड प्लीज? नॉलेज ऑफ द बिजनेस, इट्स प्रोसेस एंड एनवायरनमेंट। CAS 104, knowledge of business, comma, its processes and environment. What is common? We are going to skip that and we'll write refer. Directly एक काम करो, put the heading objective. First put the heading objective. Objective. Under that, right? Like that, right? Objective. To enable cost auditor to have clients' business processes and environment knowledge. To enable cost auditor to have clients' business processes and environment knowledge, so as
Second point, so as to ensure preparation of cost statements at regular time. So as to ensure preparation of cost statements at regular time. ठीक है? This is called what? Objective. Now put the heading scope. Put the heading scope. Knowledge of entity, business, environment, processes for betterment of team and cost auditor. Knowledge of entity, business, environment, processes. Second one, for the betterment of team and cost auditor. ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव और ये हो गया अपना स्कोप. Definitions में all definitions are same. Yes, definitions लिख लो same as 101. Put the heading definitions and write same as CAS 101. Same as here. Not even a single definition is extra. Same as CAS 101. अब आ जाओ मेन टॉपिक. Put the heading requirements of CAS 104. Requirements of CAS 104. Requirements of CAS 104. Under that, knowledge of entity, put the heading, knowledge of entity and its environment, refer CAS 101. That you know that where you have written, accordingly you can put your reference. Knowledge of entity and its environment. Put the hyphen and write, refer CAS 101. Are you sure we have written in 101, right? Refer CAS 101. Wherever you are written, just put the heading accordingly. Okay? Refer CAS 10. And remember, don't get confused between these CAS and those CAS. ठीक है ना? Now, in the new material, I am observing that instead of calling them as CAAS, now they started calling them as what? तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, दोनों का CAS ही आएगा. तो CAAS they have stopped calling it. That's why we are also calling it as CAS. ठीक है ना? तो don't get confused. तो we are doing the auditing standards. तो obviously we are talking about reference of auditing standards only. ठीक है? Now put the heading understanding entities internal control. Understanding entities internal control. Understanding entities internal control. उसको अंडरलाइन कर लो and divide it into 5 parts. Understanding entities internal control. Control environment, first one. Then entities wrap. Risk assessment process. Third, information system. Fourth, control activities. And fifth, monitoring of activities. I hope standard समझ में तो आए ना आपको. At least why they were required, because you should know that the approach कि audit start कैसे करना है, wind up कैसे करना है.
तो 101 में भी अंडरस्टूड कि प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं, ठीक है ना. एंड 102 में भी अंडरस्टूड हाउ डू वी मेंटेन अवर डॉक्यूमेंटेशन. 103 में भी अंडरस्टूड कि व्हाट आर योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट एज पर द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. एंड 104 में भी अंडरस्टैंडिंग यू शुड बेटर एक्वायर द नॉलेज ऑफ बिजनेस processes and environment. Now, under the control environment, put a down arrow and write. Auditor shall see, auditor shall see. Under the control environment, put a down arrow and write. Auditor shall see whether management has created, auditor shall see whether management has created culture of, management has created culture of, management has created culture of ethics and honesty, has created culture of ethics and honesty. Clear? Now, what is the second one? RAP. It includes, under that, right? It includes, under that A point, identifying business risks, identifying business risks. Point number 2, assessing likelihood of its occurrence, assessing, ASSESSING, likelihood of its occurrence, assessing likelihood of its occurrence. Next, understand its significance, understand the significance of risks, understand significance of risks. Or when you understand it, what do? You respond, right? Deciding actions to address those risks, deciding actions to address those risks. 4 steps, correct? पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसको असेस करो लाइकलीहुड, फिर अंडरस्टैंड करो उसकी सिग्निफिकेंस को एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इंफॉर्मेशन सिस्टम. अंडर दैट राइट, देयर शुड बी क्विक, पॉइंट नंबर 1, देयर शुड बी क्विक, reliable and trustworthy information system. There should be quick, reliable and trustworthy information system installed in entity. Installed in entity. Installed in entity. Auditors should know, auditors should know how the operations are, auditors should know how operations are initiated, recorded, processed, initiated, how the operations have initiated, recorded, processed and reported. Third point, having the knowledge of above. Third point, having the knowledge of above. Having the knowledge of above is very much required. Having the knowledge of above is very much required. Clear? Done. Third is also over. Fourth one, control activities. Under the control activities, right? Point number 1. नहीं, कोई पॉइंट नहीं है, इसमें एक ही है. Auditor should understand. Auditor should understand control activities. Auditor should understand control activities like physical controls. Auditor should understand control activities like physical controls,
biometric controls, authorizations, double approvals are existing or not. Double approvals are existing or not. आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं. What are the 4 examples I made you right? Physical controls, biometric controls, authorizations, double approvals, right? And the last heading, monitoring of controls. Monitoring of controls. Ensure that entity reviews it. Ensure that entity reviews it, REVIEW, reviews it and revises it at regular intervals. Reviews it and revises it at regular intervals. Point number 2, like internal check system and internal audit system. Like internal check system, internal audit system. अच्छा मेरे को ये बताओ, multiple activities should be handled by the single person or multiple people for the multiple activities? देखो, even though chances of collusion are there, but at least you can reduce the chances of frauds and errors. You should not allow the 2 activities to be handled by the same person. How you will feel if the ticket seller in the cinema hall is also the ticket checker? That would be a problem, na? And the person who is maintaining the cash, physical custody, is also the one who is preparing books of accounts. So these 2 activities always create more chances of frauds and error. Remaining अपन कल wind up करेंगे. And tomorrow we'll be starting with the new chapter. We'll see in line what is coming. ठीक है? चलो, see you guys tomorrow. Thank you everyone.